In the last class, we were discussing about how to prepare a test bench for testing the OR gate. In the simulation, we checked about this gate. Now, in the behavioral simulation, now I will come to our plan. How's our implementation plan? We have, this is the multiplexer, MUX. Is it right? This is the MUX. And first I will complete the entity part for this multiplexer, and then ABCD S0, S1 we will name the ports, and then we will map the ports. Then we will take the signals and we'll copy this program. Is it right? In this case, what is our top module? Our top module is this. Inputs are A, B, C, D, which we have mentioned in the program, A, B, C, D. S1 and S0 are again inputs, and so on. And then I'm in a position to show you how all the models are completed into one system or compiled into the one system. Now I'm writing the entity part for this. I will come to this part. Again, I will come to the implementation. If you are able to see here, I will come to this implementation part. I will click on this device. I will right click here. I will use the new source. Using the new source, and this is VHDL module, and I'm giving the name to this module is the name of the top module 4_bit 4-bit mux 4-bit mux or 4:1 mux. We can write in that way also. 4:1. We can write something like this also. It should be the identifier. That's it. Our intention. This is it right? This is 4_1_ mux. This name I have given. I will use the next. Then it will ask for the names of the ports. Just I will zoom out it and I will show the names of the port for this mux. इस mux के लिए ports के नाम क्या है? B, C, D, S0 and S1. These are the names we have planned. Is it right? I will use whatever we have planned. The same thing as it is. Now here I am putting here the name of the module A, B, C, D. Then inputs, another inputs are S0, S1. These are the inputs available. Then we are using its output. Again, I will zoom out. What is the output? We have tried to mention here. It's we have mentioned ABCD S0, S1 and output is a Y. We are mentioning the output as a Y. In this case, just I will zoom in again. And I will mention here its output, which is the Y. This is Y. This is in. I will make it as out. We can change this later on also. There is no issue. The next and finish. Now look at. I will zoom out. Now look at this model 4:1 mux is created here, which is highlighted. 4:1 mux, which is highlighted. What I will do? I will remove the comments only. If I'm removing the comments here, these are the comments I'm trying to remove. And here I want to complete that 4:1 mux. Now, if I'm planning here something like this, I will come back to this board and I will discuss with you. In this particular case, how is the system? This is our top mux. This mux is our top model. This is 4:1 mux is our top model now. In this internally, we have that NOT gate, something like this, AND gates, and finally OR gate, something like this. This is our top model. What it consists of? Inputs, 4 inputs, A, B, C, D, then 2 select lines S0 and S1, and finally one output, that is Y. Now, I will make this entity as a top module. Is it right? Top module, and I will discuss. Is it right? Just I will come back to you within a minute. Just wait. I will first make it as top module. I will go to this tool and just I will show it to you by zooming it. I will select this. I will right click to this and I will set it as a top module because this will be my top module. Is it right? Here, yes.
Now look at, this is my top model. I will zoom out. Now look at, so many files are created here. यहाँ पे आप यहाँ से भी देख सकते हो. डिफिकल्टी है कोई? या तो आप इसको डबल क्लिक करके यहां से भी ओपन कर सकते हो. ये नॉट गेट है, या और गेट है, ये 3 इनपुट एंड गेट है, या अभी मक्स का जो मैंने क्रिएट किया वो है. आप यहां से भी जा सकते हैं. क्लोज करते समय आप यहां से भी क्लोज करते जा सकते हैं इसको. यस, सेव इट. आई विल क्लोज फ्रॉम दिस साइड आल्सो. यहां से भी मैं, ये बॉटम जो दिख रहा है यहाँ पे इस विंडो, यहां से भी हम क्लोज कर सकते हैं और यहां से हम ओपन भी कर सकते हैं. ये मेरा नॉट गेट है, ये मेरा समरी है. आई कैन ओपन फ्रॉम हियर. Is it right? यहाँ पे ओपन कर सकते हैं. This is now model. Now what is my plan? My plan is to implement this program. इस प्रोग्राम को मुझे इंप्लीमेंट करना है. एंटिटी इस पार्ट को ऑलरेडी क्रिएट हुआ है, ये पार्ट ऑलरेडी क्रिएट किया है. नाउ वी हैव टू कॉपी दिस कंपोनेंट फॉर नॉट गेट, कंपोनेंट फॉर एंड गेट, कंपोनेंट फॉर और गेट एंड सो ऑन. ये सभी कंपोनेंट्स मुझे लिखने पड़ेंगे. मिस हियर आई विल कम बैक टू दिस प्रोग्राम. इस प्रोग्राम पे मैं आता हूं. Now I will zoom it and I will show it to you. This is the library declaration part. This is the entity declaration part. This is the architecture. And all the declaration should be before the beginning of the architecture. तो यहाँ पे हम component declare करते हैं. इस फिगर में हमारे पास कितने components हैं? In this figure we have the 3 components. One is NOT gate, 3 input AND gate and OR gate. We have to declare these 3 components by using this component declaration. Is it right? How I will do? I will declare this as a NOT gate. तो NOT gate का जो entity है इसी को मैं copy कर रहा हूं, तो error होने का chances कम हो जाता है. I will come back to this initial module. यहाँ पे आता हूं मैं, इसको paste कर रहा हूं. Just this entity I will replace it by component. इसको कंपोनेंट से मैं रिप्लेस कर रहा हूं. एंड यहां पे मैं लिखूंगा कंपोनेंट. जस्ट आई विल जूम इट. मैंने क्या किया यहां पे, लुक एट हियर, दिस एंटिटी इज रिप्लेस्ड बाय द कंपोनेंट. एवरीथिंग इज द सेम. एंड हियर कंपोनेंट. इज इट राइट? तो ये मेरा component declaration complete हुआ. This I have completed. I will save the design. I have completed the component declaration for. Sir, Yes. COMPONENT. Just I will correct it. I will correct it. Component. COMPON. This is ENT. Component. Now this is fine. Right. Now I want to write the another component. Second component मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ. And second component I will use this. This is nothing but AND gate. I will double click on it. This is the entity of that. ये entity मैं as it is copy कर रहा हूँ. Just I am copying this entity. I am coming back to this top module. और इस top module में आने के बाद मैं यहाँ पे उसका entity paste कर रहा हूँ. But I am making its entity as a component now. This is component. Is it right? And finally, I will make it as end component. Right? This is end component. Is it right? I will save this design. Now I have made NOT gate as one component, 3 input AND gate as second component. The fourth component I will make it as this OR gate. I will copy the entity of OR gate. I will come back to this module. इस मॉड्यूल में आता हूं मैं, इसके नीचे मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूं. Again what I will do, I will replace this entity by component and this name by component. That's it. This name by the component. And I will save the design. Is it right? In the component, this is the optional. ये is optional होता है, लेकिन एंटिटी में ये मैंडेटरी होता है, इसलिए मैं is को प्रीफर करता हूं. कभी कभी मैंने क्लास में भी डिस्कस किया रहेगा. दिस is नॉट मैंडेटरी. दिस is, ये जो is है ये मैंडेटरी नहीं है. लेकिन जब हम कॉपी करते हैं एंटिटी से, नॉट गेट से एंटिटी से, इन दैट गेट दैट is there. That's why is I will consider that is as it is. उसको as it is कंसीडर कर.
Is it right? Just I will इसको zoom out करता हूं मैं फिर से. I will zoom out and I will come back to the program which I have already discussed. हमने क्या किया? एंटिटी डिक्लेरेशन किया, आर्किटेक्चर हो गया, कंपोनेंट डिक्लेरेशन हो गया, कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3 तीनों को. उसके बाद इस सर्किट डायग्राम में जो वायर्स है, जैसे कि P, Q, R, S, उसके बाद ये S0 बार, S1 बार, these wires are not mentioned in the entity. Those wires I will declare under the signal declarations. Is it right? Yes. These wires I will declare under the signal declaration. Look at here. The signal followed by name of the signal, STD logic. Means I want to declare S0 underscore bar, S1 underscore bar, P, Q, R, S as a STD logic as a signal declaration. तो मैं उसको complete करता हूं. I will come because all the declaration should be before the begin of the architecture. यहाँ पे हमारे architecture का begin है. Here is my begin of the architecture. I will complete everything before that. Signal. Just I will write signal followed by name of the signal. What is the name of the signal I have given? S0 underscore bar is one signal. Then S1 underscore bar is my another signal. Then P, Q, R, S. These are my signal followed by the colon followed by this is STD underscore logic. Is it right? I will use a semicolon here. This is my signal declaration. Now look at what we have done. मैं यहाँ पे एक आपको एक थोड़ा सा दिखाता हूँ. मुझे एक आदत है सेपरेट करने की. डबल हाइफन इज कमेंट. तो मैं इसको एक कमेंट लिखता हूँ यहाँ पे. ये मेरा है जो फर्स्ट पार्ट है. दिस इज माय फर्स्ट पार्ट इज अ लाइब्रेरी. फिर मैं यहाँ पे कमेंट वाला लाइन डालता हूँ. ये दोनों कमेंट्स के बीच में जो है मेरा एंटिटी पार्ट है. यहां पे मेरा आर्किटेक्चर शुरू हो रहा है. यहां पे मेरा फर्स्ट कंपोनेंट कंप्लीट हो रहा है. आई एम एबल टू सेपरेट द मॉड्यूल्स. उसके बाद मेरा दूसरा कंपोनेंट यहां पे खत्म हो रहा है. फिर तीसरा कंपोनेंट मेरा यहां पे खत्म हो रहा है और मेरा डिक्लेरेशन यहां पे खत्म हो रहा है. आई एम एबल टू कंप्लीट माय डिक्लेरेशन हियर. उसके बाद मेरा आर्किटेक्चर शुरू होना चाहिए. तो मैं आर्किटेक्चर को यहाँ पे मैं इसके बीच में जो लाइन्स है उसको डिलीट करता हूँ. बिगिन ऑफ द आर्किटेक्चर. इज इट राइट? थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे से दिखता है. तो ये लाइब्रेरी है, एंटिटी है, ये आर्किटेक्चर का बॉडी है. उसके बाद एक कंपोनेंट 1, कंपोनेंट 2, कंपोनेंट 3 सिग्नल. दिस इज बिगिन ऑफ द आर्किटेक्चर. इज इट राइट? जूम आउट करता हूँ और मैं जो प्रोग्राम हमने डिस्कस किया था उसको आता हूँ. I'm coming back to the program. Is it right? What is the first part? Is the entity, then component, then signal declaration. उसके बाद begin of architecture है और उसके बाद हम मॉड्यूल लिखते हैं M1, M2, M3, M4 and we are doing the connections for that. Is it right? In that way. Now what I will do? I will here name the module 1. This is M1. This is component initialization. I'm using this component initialization here. How is the syntax for component initialization? This identifier followed by the colon followed by the name of the component followed by the port map followed by the connections. Is it right? And the connections I'm using the positional association. I'm following for this. Identifier followed by the name of the component followed by the colon followed by the name of component. तो नेम ऑफ कंपोनेंट जो मेरा फर्स्ट नेम है एंड नॉट अंडरस्कोर गेट, नॉट गेट. आई विल कॉपी दिस. आई विल नॉट अंडरस्कोर गेट. यहां पे नॉट अंडरस्कोर गेट मैंने जो यूज किया है. उसके बाद पोर्ट मैप रहेगा, उसके बाद कनेक्शंस रहेंगे, उसके बाद रहेगा पोर्ट मैप. इज राइट? देन आई विल डू द कनेक्शंस हियर. इसके बीच में कनेक्शन करूंगा. यहां पे सेमीकोलन मैं लेता हूं. इज इट राइट? माय सेकंड मॉड्यूल, लुक एट हियर. If I am coming to the circuit diagram, first module is M1, NOT gate. Second module is also NOT gate. I will make this copy and paste. मैं इसको copy करता हूँ और इसी को मैं paste करता हूँ. But name of the module will be the M2. मैं इसको M2 करता हूँ. यहाँ पे connections में करूँ. Then which is our third module? If I am coming to the circuit diagram, third module is the AND gate, 3 input AND gate. I will copy its name and 3 in. ये मैं नाम copy करता हूँ. I'm copying this. Here I will write this is M3 followed by the colon followed by this name followed by port map followed by port list. Is it right?
यहां पे पोर्ट लिस्ट है। Is it right? There is the port list. M3, फिर उसके बाद if I am coming to this figure M4, M5, M6, ये जो मेरे remaining three models है M4, M5, M6, all these are the three input gate, so that I will copy this statement. इस statement को मैं copy करता हूँ. I will copy this. Then here this is M4, this is M5, this is M6. I will make the correction. M1, M2 यहाँ पे होगा. M3, this will be M4, this will be M5, and this will be M6. Is it right? Are you able to see this? This is M1, M2, M3, M1, which is my AND gate, and the next module is the final module, which is the M7. M7 followed by the colon, followed by that name. What is the name of M7? This is the name of the M7. I will copy this name. I will paste here. I will paste here, and then I will use the port map. Port map में यहाँ पे space चाहिए, फिर उसके बाद start bracket, then end bracket, followed by the semicolon. And now I will make the connections. Deliberately मैंने यहाँ पे space छोड़ा है कुछ ये बीच में. यहाँ पे M1, M2 मेरा NOT gate है, M3, M4, M5 मेरा AND gate है, और M7 मेरा है जो OR gate है. And I will make the connection list here. Is it right? I will make the connection list. Now look at how are the connections. Here, in this case, if I'm coming to this program, which we have completed here, S1, S1 bar. These are the two wires going to module number 1, which I am able to show here. Look at this. If I'm able to zoom it a little bit, look at this. To this module, input क्या है? ये इस gate के लिए एक तो A आ रहा है. This is one. First, I'm able to make the connection. S1 इसके इनपुट को, S0 इसके इनपुट को, इसका आउटपुट है S1 बार और इसका आउटपुट है. I will make the connection of these two modules first. Is it right? Here S1 is input, S0 is input. Now in this case, its input is S0, comma, और सेकेंड गेट का जो इनपुट है वो क्या है? S1 है. This is S1, comma. Are you getting me? कभी कभी इस S0 को SO हो जाता है और वहां पे भी गड़बड़ आता है, तो S0 और SO में सेपरेट करना ध्यान में रखना है, कभी गलत आ रहा है. This is S0. Now look at here how I am doing the connection. Here I have connected S0. Output of this gate must be S0 bar, and which I have written here, that is S0 bar. I will copy this. I will paste here S0 bar. ये हो गया connection. S0, S0 bar. S1 के लिए क्या connection है? S1 and S1 bar. I will make it as S1 bar. Are you able to see this now? Now look at here. Input is S0, output is S0 bar. Input is S1, output is S1 bar. We have done those connections. Are you getting me? हमने वो connections कर लिए हैं. इस फिगर को अगर हम आते हैं, यहाँ पे S1, S0 बार हो गया. Now I will make the connections for module number 3. Now look at the sequence. Sequence is I2, I3, I4. पहले जो कनेक्ट करूंगा I2 को होगा, सेकंड जो कनेक्ट करूंगा I3 को होगा, थर्ड जो कनेक्ट करूंगा I4 को होगा. Is it right? This first I am writing the A. इस AND gate का जो ब्रैकेट है उसमें मैं पहले लिखूंगा A, बाद में लिखूंगा S0 बार और उसके बाद में लिखूंगा S1 बार. Is it right? Are you able to get me? Now here if I am minimizing this, yes, I'm coming back to this. Yes. Any difficulty? I will write here. Getting sir. हाँ. A. उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा मुझे? S0 बार. उसके बाद S1 अंडरस्कोर बार. ठीक है. नाम ध्यान देखना. ये S0 बार है, ये S1 बार है. ठीक है. And finally, I will write its output. इसका output क्या रहेगा? I guess P. Its output is a P. I will check once again. मैं इसको zoom out करता हूं. A S0 बार S1. मैं यहाँ पे इसके connection check करूंगा. First connection है A. दूसरा connection है S0 बार. Right? तीसरा connection है S1 बार. और इसका जो output है, that is the P. Fine. Is it right? Then what are the next connections? Next module है, इसके connections क्या होंगे? ये module number 2, which is M4. M4 के लिए क्या connection होगा? The connections for the M4 are, पहले B जाएगा, दूसरा जाएगा S0.
Is it right? Are you able to see here? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये है this wire is S0, ये S0 है, यहाँ पे जा रहा है, और ये जा रहा है S1 बार. Miss first I will connect B. दूसरा मॉड्यूल जो है, मैं इसको जरा जूम करता हूं, दूसरे मॉड्यूल में पहले मैं कनेक्ट करूंगा B, कॉमा, उसके बाद क्या जाएगा, आई गेस S0, कॉमा, उसके बाद जाएगा S1 अंडरस्कोर बार, आई गेस, एंड नेक्स्ट विल बी Q. इज इट राइट? अगर मैं कोई गलत कर रहा हूं तो जस्ट मुझे रिमाइंड कराना, बिकॉज हाँ, दिस इज B S0 बार. आई विल चेक वंस अगेन. यहाँ पे B जा रहा है, फिर S0 जा रहा है, फिर S1 बार जा रहा है, इसका आउटपुट है Q. फाइन, आई गेस. इज इट राइट? नाउ द नेक्स्ट मॉड्यूल है C. यहाँ पे C जाएगा, फिर S0 बार जाएगा. Here will be, I will zoom it. Here will be the C. ये कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो फर्क नहीं पड़ेगा. C के बाद क्या था? What was the next? हाँ, C के बाद था S0 बार, आई गेस दिस इज बार, S0 बार और S1, S0 बार और S1. अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ S0 बार, S0 अंडरस्कोर बार, एंड देन व्हाट वी हैव, सॉरी, S0 अंडरस्कोर बार, उसके बाद आई गेस S1, और इसका आउटपुट रहेगा PQR, आई गेस. इज इट राइट? इट्स आउटपुट इज R. तो फिर से एक बार चेक करते हैं. C S0 बार, यहाँ पे C होगा, S0 बार हो गया, and then this is S1, fine, and its output is R, fine. Now last में क्या होगा? D S0 and S1. Here I will zoom it again. Here it will be D, comma, S0, comma, S1, comma, and its output PQRS, I guess S. Is it right? Its output is yes. Now again I will zoom it out. I will check it. This is S, and then is OR gate के लिए PQRS input and Y is the output. Now if I'm coming to this module, last module, here I will zoom it. One input is a P, another is a Q, another is R, then S, and sorry, just I need to click here. This is P, comma, Q, comma, R, comma, S, and finally its output is the Y. ठीक है, अभी हमने सभी कनेक्शंस कर लिए. मैं इसको जूम आउट करता हूं. इज इट राइट? नाउ लुक एट हियर प्रॉपरली. यहां पे थोड़ा ध्यान देके देखना आप लोग सभी इस विंडो को. आई एम शोइंग दिस विंडो. इस विंडो को जरा ध्यान देके देखना. अब जब मैं इसको सेव करूंगा, ये विंडो में बहुत सारे चेंजेस होंगे, बट दो चेंजेस आई वांट टू शो टू यू. मैं इसको जूम करता हूं. आई विल जूम इट. इज इट राइट? नाउ जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा, ये तीनों मॉड्यूल्स इस मॉड्यूल के अंदर जाएंगे और यहाँ पे प्लस साइन आएगा. मींस ऑटोमेटिकली सिस्टम विल एक्सेप्ट योर कंपोनेंट एज अनदर इंटरनल एंटिटी एंड इट विल एक्सेप्ट. नाउ लुक एट हियर. आप सभी लोग देख रहे हैं आई होप. तो इस पार्ट को मैं इस पार्ट को देखना. अभी ये क्या है? अभी यहाँ पे कैसा है? यहाँ पे अभी इस डिवाइस के अंदर एक मॉड्यूल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा है. लेकिन जैसे मैं इस डिजाइन को सेव करूंगा, सेव करते बराबर ये मॉड्यूल के अंदर ये तीनों मॉड्यूल अपने आप आ जाएंगे और यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा. लुक एट हियर केयरफुली. जस्ट आई एम सेविंग दिस डिजाइन. लुक एट हियर. मैंने जैसे सेव किया, ये 4 बिट हमारा टॉप मॉड्यूल बना, यहाँ पे प्लस साइन आया. मैं इस प्लस साइन को क्लिक करता हूं. नाउ लुक एट this M1 is not gate, M2 is not gate, M3 is AND gate, M4 is AND gate, M5 is AND gate, M6 is AND gate, and M7 is OR gate. ये अपने आप इसके साथ बन जाते हैं. हम इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं, इसका इंटरनल आर्किटेक्चर भी देख सकते हैं. I will show that first to you, and then I will discuss about another approach which is bottom up approach. हम डिस्कस करें, इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा टॉप डाउन अप्रोच. That will be sufficient to you. Now I will click on this module. I will use synthesize XST. I will double click on this. We will synthesize it.
And if you want to see the console here, you can see what are the process is going on. Errors, you can click on the errors. Warning, you can click on the warnings, or you can find out the results, whatever you are expected. Here, look at this complete tick. This complete tick means synthesis has been completed. Synthesis हो गया अभी हमारा design. Now, if there is any error, it will show the error is available in which module and where is the error. We will check it for the correctness, that is logical simulation भी हम देखेंगे. But before that, I will show the RTL schematic. Start with Explorer, start with schematic. Generally, we will start with schematic. This is my top model. टॉप मॉड्यूल है, यहाँ पे ए बी सी डी 4 इनपुट्स है, S0 S1 और 2 इनपुट्स है, एंड इसका आउटपुट है Y. If I am double clicking on this, now look at, double clicking on this, we are able to see this. Now look at, these are the two NOT gates, then 1 2 3 4 AND gates, and these gates are connected here. Miss here, this is 4:1 mux is, we have the two inputs and we can check the connection. AND gate का connections कहाँ पे जा रहा है? यहाँ पे जो wires है, इसके ऊपर आप click करके इसको भी आप देख सकते हो. ये wire कहाँ पे connect हो रहा है? Look at this wire. This wire is connected to this and this terminal. S0 कहाँ पे connected है? S1 कहाँ पे connected है? ये B terminal कहाँ पे connected है? We can see here is connected, and this is 1 2 3. These are the 4 AND gates, and this is one is the OR gate, and this is the Y. This is internal. इसका भी internal architecture आप देख सकते हैं. ये AND gate कुछ इस तरह से, इसका भी आप internal architecture देख सकते हैं. ये NOT gate है, इसका भी internal architecture आप देख सकते हैं, इसका भी देख सकते हैं, इसका भी देख सकते हैं. It's internal architecture we can see, and its internal architecture we can see. Means we are indirectly we are able to see this particular figure. We have the two NOT gates, 4 AND gates, and one is the mux. In that, one is the OR gate, and this is the internal architecture. This is the RTL schematic of this. Now, when we have synthesized it completely, we understand that the system or whatever the model we have created, यहाँ पे इसको minimize करके भी रख सकते हैं, इसको maximize भी करके रख सकते हैं. Choice is yours. Now, with this much, we sure that we don't have any syntax error. But we want to check it for the logical error. इसका logical error के लिए देखते हैं. तो मैं यहाँ पे फिर से zoom करूंगा इसको. यहाँ पे implementation है, simulation के लिए जाते हैं. Now look at, जो हम simulate करेंगे वो यहाँ पे रहेगा. हमने NOT gate को simulate किया था, अब भी फिर से आप simulate कर सकते हैं. AND gate को simulate किया था, वो भी यहाँ पे है. OR gate को simulate किया था, वो भी यहाँ पे है. ये mux को simulate करना है अभी हमें. ये यहाँ पे आया है, ये mux, उसके ये अंदर वाले मॉड्यूल्स भी ऐसे ही रहेंगे, आप मिनिमाइज करके रख सकते हैं. नाउ वी आर ट्राइंग टू वेरीफाई दिस फॉर द करेक्टनेस. हम इसका वेवफॉर्म देखना चाहते हैं. इज इट राइट? नाउ आई विल राइट क्लिक टू दिस. आई विल यूज द न्यू सोर्स. आई विल यूज द न्यू सोर्स, एंड आई विल यूज हियर टेस्ट अंडरस्कोर 4 underscore 1 underscore mux. This device we want to test. 4:1 mux हमें टेस्ट करना है. I will use the test bench. This is test bench. Click on the next. In this test bench we have 1 2 3 4. 4 options are there because we can test the AND gate is also available in the system. AND gate is available in the system. NOT gate is available in the system. OR gate is available in the system. But we want to check for the mux. I will put the cursor on the mux. Then I will click on the next and I will click on the finish. Now the test module for that will be created and we have to apply the stimulus. मैं इसको zoom out करता हूँ. Look at here. अगर मैं यहाँ पे इस टेस्ट, इसको थोड़ा सा जूम करके फिर से अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, तो हमारा टेस्ट 4_1_ mux, दिस इज द टेस्ट फाइल. इसको मैं क्लिक करूंगा, ये UUT यानी कि यूनिट अंडर टेस्ट, ये 4:1 mux है और इस mux के अंदर हमारा ये पूरा सिस्टम बना हुआ है. वी आर प्लानिंग टू टेस्ट फॉर दिस. इसको हम टेस्ट कर रहे हैं और इसका जो कोड है यहाँ पे है. पहले इस कोड से मैं कमेंट्स को डिलीट करूंगा. आई विल डिलीट द कमेंट्स एंड आई विल गिव द टेस्ट फाइल टू दिस. टेस्ट फाइल कैसे देना है हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद में मैं आपके साथ क्वेश्चंस लूंगा. आई विल डिलीट दिस कमांड्स फर्स्ट. जो कमेंट्स हैं, कमेंट्स को मैं डिलीट कर रहा हूं. आई एम डिलीटिंग द कमेंट्स ओनली. इज इट राइट? नाउ वी आर यूजिंग द मल्टीप्लेक्सर हियर, mux. Is it right?
मक्स इज अगेन द कॉम्बिनेशन सर्किट, मक्स भी कॉम्बिनेशन सर्किट है। इसलिए इस टेस्ट फाइल में से जो भी मेरे क्लॉक वाले स्टेटमेंट्स होंगे मैं उसको डिलीट करूंगा। दिस इज वन क्लॉक स्टेटमेंट, आई विल डिलीट इट। दिस इज माय सेकंड क्लॉक स्टेटमेंट, ये सेकंड क्लॉक स्टेटमेंट है, इसको भी मैं डिलीट करूंगा। और फिर यहाँ पे और एक क्लॉक स्टेटमेंट है, इसको भी मैं डिलीट करूंगा। आई विल सेव द डिजाइन, मैं डिजाइन को सेव करूंगा। देन इफ आई एम कमिंग बैक, इंसर्ट स्टिमुलस हियर, यहां पे हमें स्टिमुलस देना है, रैंडमली स्टिमुलस नहीं देते हैं। वी हैव टू गिव द स्टिमुलस इन द प्रॉपर वे। कैसे स्टिमुलस देना है मैं आपके साथ पहले डिस्कस करूंगा, फिर यहां पे उसको स्टिमुलस हम अप्लाई करते हैं। जस्ट आई विल जूम आउट। नाउ इफ कमिंग टू दिस, हाउ टू टेस्ट दिस मक्स, इस मक्स को कैसे टेस्ट करना होता है, जस्ट आई विल शो इट टू यू। आई विल कम बैक। ये मक्स को टेस्ट करना है, इज इट राइट? मीन्स व्हाट, whenever select line is 0 0, my output y will be a. Select lines are 0 1, my output y will be b. For 1 0, my output y will be c, and for 1 0, my output y will be d. This is the truth table. For 1 1, my output y will be d. This is the truth table for multiplexer. Is it right? But as far as the binary numbers are concerned, this A has two options. A may be 0 or may be 1. अगर ये 0 0 है तो y may be same as A. A अगर 0 है तो y भी 0 रहेगा. A अगर 1 है तो y भी 1 रहेगा. In the similar way, here also we have the two options. 0 may be 1. Here also we have the two options. Maybe 0 or maybe 1. Here also we have the two options. Means it is maybe 0 or maybe 1. Means what I mean to say, whenever my A is 0 and S is also 0 0, then my Y will be 0 because it is same as A. If my A is 1 and S is 0 0, in that case, my y is also 1, that I mean to say. Is it right? Now, I will set y as 0 first, then s as 0, then y as 1 and s as 0, and so on. Means इसके लिए मैं दो स्टिमुलस यूज करूंगा, y is 0 and y is 1. इसके लिए मैं दो a is 0 and a is 1. इसके लिए दो स्टिमुलस क्रिएट करूंगा मैं, b is 0 and b is 1. इसके लिए मैं दो स्टिमुलस क्रिएट करूंगा, c is 0 and c is 1. इसके लिए मैं दो स्टिमुलस क्रिएट करूंगा, d is 0 and d is 1, and then we will check. Otherwise you can check the corner cases also. Is it right? I will zoom it now. Now look at a. पहले मैं a को 0 रखता हूं. What I will do? I will write A is assigned as single quote 0. ये 0 होने के बाद S0 क्या है? What is the S0? That is important for me. S0 is assigned as something 0 semicolon, and S1 is assigned as again 0. Here I will use semicolon. इसमें मुझे आउटपुट क्या मिलना चाहिए? यहां पे मेरा आउटपुट आना चाहिए, मैं कमेंट में लिखता हूं यहां पे, कमेंट में यहां पे मैं लिखता हूं, यहां पे y शुड बी इक्वल टू, y का वैल्यू क्या आना चाहिए? 0, सेम एज a, क्योंकि 0 0 लिख रहे हैं हम. इज इट राइट? एंड दिस शुड बी वेट फॉर 100 नैनोसेकंड. इज इट राइट? ये मैंने लिखा, ये a इज 0 के साथ. इसको मैं कॉपी और इसको यहां पे पेस्ट करता हूं. आई विल पेस्ट इट. अगर यहां पे मेरा a 1 है तो यहां पे भी मेरा y क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए. a 0 होने के बाद s 0. अगर इस कंडीशन में ये 0 की जगह 0 1 भी अगर है तो यहां पे a का आउटपुट नहीं आएगा, वो b का आउटपुट आएगा जो b हम असाइन कर रहे हैं. इज इट राइट? नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल कॉपी दिस होल थिंग. कंप्लीट को मैं कॉपी करता हूं.
और यहां पे मैं इसको लिखता हूं। यहां पे ए की जगह मैं पहले बी को 0 करता हूं और यहां पे मैं फिर से बी को 1 करता हूं। लेकिन S0 और S1 ये क्या चाहिए? ये 0 1 चाहिए। दिस विल बी द 1। ये 0 1 होगा और ये भी 0 1 होगा। क्योंकि ये 0 1 होगा तो B 0 है तो आउटपुट 0 आएगा और B 1 है तो आउटपुट 1 आएगा। इट इज सेम एज B। Is what I mean to say here indirectly I mean to say Y is same as A. Here Y is same as A. Here this I mean to say. You can check for other option। और यहाँ पे मैं क्या कहना चाहता हूँ? Y is same as B। और यहाँ पे भी मैं सेम कहना चाहता हूँ Y is same as B। ये मैं इसको थोड़ा सा टैब लेके आगे लेता हूँ तो दोनों में डिफरेंशिएट करना आपको आसान होगा। This will be Y is same as B and here it will be Y same as B। यहाँ पे B का वैल्यू 0 है तो Y 0 रहेगा, B का वैल्यू 1 है तो Y 1 रहेगा। Is it right? This is 0 1 के लिए। Is it right? This is 0, this is S0 is MSB, this is LSB. That's why it is 0 1। We will read this 0 1 something like this। Is it right? उसके बाद मैं यहाँ पे फिर पेस्ट करता हूँ। सॉरी, जस्ट आई विल पेस्ट एवरीथिंग। ये कंप्लीट मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। कॉपी यहाँ पे मैं C का वैल्यू 0 रखता हूँ। C का वैल्यू 0 और यहाँ पे मैं C का वैल्यू रखता हूँ 1। C का वैल्यू 0, C का वैल्यू 1। S0 क्या रहेगा? 0 रहेगा और ये S1 क्या रहेगा? 1 रहेगा। बिकॉज 1 0 हम इनपुट दे रहे हैं, ये 1 0 इनपुट रहेगा। ये 0 रहेगा, ये 1 रहेगा, इस यहाँ पे हम इनपुट दे रहे हैं 1 0। तो Y हमारा क्या आना चाहिए? 0। बिकॉज इट इज सेम एज द C। यहाँ पे इट इज सेम एज C, यहाँ पे क्या होगा? Y इज माई सेम एज माई C। ये C की तरह रहेगा 1 0 के लिए। अगर मैं फिर से यहाँ पे पेस्ट करता हूं, B हो गया, C हो गया, यहाँ पे D का वैल्यू हम उल्टा करते हैं। पहले मैं इसको 1 रखता हूं, फिर उसको 0 रखता हूं। आप सेम भी रख सकते हैं। यहाँ पे D का वैल्यू 1 रखूंगा तो Y का वैल्यू क्या आना चाहिए मेरा? Y should be 1 या Y का वैल्यू 1 आना चाहिए। इट शुड बी सेम एज D किस तरह सेम रहेगा। और यहाँ पे Y का वैल्यू कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए एंड इट शुड बी सेम एज द वैल्यू ऑफ D। Is it right? This is B is 1 0 1. This is 1 1. I will make it as both as 1 and 1 and we will make for this. Now I will zoom it again. I will show it to you. I will zoom it. I will show it to you. Yeah. Yes. What I have done? A0 ये 0 रखा है मैंने तो ये आना चाहिए। This is for A is 1, this is for B and this is this everything stimulus I have applied। Is it right? And finally कुछ तो अप्लाई करते हैं, तो ऐसे भी छोड़ दिया तो भी चलेगा। लेकिन यहाँ पे हर बार पहले 1 को टेस्ट करो। मैं यहाँ पे उल्टा किया मैंने, पहले D को 1 किया तो आपको समझ सके। यू कैन चेंज एनी सीक्वेंस एंड आई विल सेव दिस। आई विल सेव दिस। वी हैव अप्लाइड द स्टिमुलस हियर। स्टिमुलस यानी कि रैंडमली 1 या 0 अप्लाई करना नहीं होता। वी हैव टू अप्लाई द स्टिमुलस इन अ प्रॉपर वे टू टेस्ट द सर्किट इन द प्रॉपर सेंस। इज इट राइट? Now, if I'm clicking my cursor on this and I'm clicking on simulate behavioral model, this double click, save the design, yes, and we are able to see the waveform. If there is no error, if there is error, it will show the error and we have to simulate those kind of the things. Now look at it. This is the waveform generated by the system. I will minimize it. I will bring it into the proper format and I will discuss. Is it right? इसको थोड़ा सा मैं zoom करता हूँ and I will discuss. Now look at this part. Otherwise, I will make this window to float. Just wait. एक second. Yeah. Look at this window. इस विंडो को जस्ट मैंने पॉप अप किया, nothing else. Now look at here. This portion is everything is 0 0 0 0 0. Now we can test here. Now look at the S0 and S1. What is this? This is 0 and this is 0 at this point.
0 0 0 0 पे हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए? What should be the output? Output should be same as a A. Now look at what is my A? My A is 1, that's why output is 1. Are you getting me? Now when I'm coming to this portion of the waveform, now look at S0 and S1. S1 is 0, S0 is 1. Means we have the 0, 1 as input. 0, 1 पे mux क्या select करेगा? 0, 1 पे mux select करेगा B. B का value क्या है? 0. If the B is 0, in that particular case, your Y should be 0 in that slot. Y हमारा 0 है. To the next slot. अगर next slot में आते हैं हम, look at this two, 1 0. ये 1 0 है. What is S? S is 1 0. अगर S मेरा 1 0 है, in that particular case, 1 0 means C. What should be the C? C का value जो है, ये same value रहेगा. Sorry, this is 1 0. No, it is not 1 0. This is 0 1 again because this S0 is LSB and S1 is the MSB. 0 1 है. 0 1 पे A का जो value है, वो value copy होगा. Now look at what is the value of A. A का value यहाँ पे है 1, तो इसका value भी 1 रहेगा. फिर अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, look at the S0 and S1. ये 1 0 दिख रहा है. S1 is 1. Are you getting me? What is the value of S1? S1 is 1. What is the value of S0? Is 0. This we are getting 1 0. ये अगर हमें ये 0 मिल रहा है, S0 का वैल्यू ये 1 मिल रहा है, तो हमें 1 0 मिल रहा है. 1 0 पे हमें वैल्यू क्या आना चाहिए? If the 0 0 पे A आएगा, 0 1 पे B आएगा और 1 0 पे क्या आएगा? C आएगा. Is it right? 1 0, ये 1 0 है, 1 0 पे C आएगा. What is the value of C at this instant? Value of the C is 0. That's why this Y should be 0. ये C का वैल्यू कहाँ पे? ये C का वैल्यू है यहाँ पे. This value of the C is 0. That's why output is also 0. If we are coming to this window, अगर हम इस विंडो में आते हैं, इस विंडो में, now look at this carefully. In this particular window, if I'm coming to this window, now look at here. What is the S0? S0 is 0. What is the S1? S1 is 1. Still our input is, select line is 1 0. If the select line is 1 0, our output will be same as the C. Now look at this instant, what is the C? C is 1, that's why your output is 1. Now look at this part. This part is the C, that's why our output is also 1. Is it right? Similarly, in the next case, what I have done for this portion, now look at what is the S0 and S1. S0 is 1, S1 is 1. Means for 1 1, my output should be same as D. मेरा output क्या होना चाहिए? Same as D. Now look at what is the D? D is 1. Now look at here. Where is the D? D is this. This is 1. Is it right? ये D मेरा 1 है. ये मेरा continuous D1 हो रहा है, तो मुझे continuous मेरा output भी 1 मिलेगा. D जब भी 0 हो जाएगा, output 0 हो जाएगा. And so on. Is it right? Means in this way, you must be in a position to justify your answers regarding the implementation. I will close this file. I will close this file. So, is it right? I will exit. Now look at, this is the stimulus. We have applied, and in this way, we can test the circuit. And whatever this approach, I will come back to the implementation. Whatever we have used the approach, this approach is nothing but the bottom-up approach. Means initially, we have designed this NOT gate, then AND gate, then OR gate, then we have designed the top module, and everything is covered, all these modules are covered into that. That is the philosophy. Is it right? Now, इसको हमें प्रिंट आउट लेना होता है जब भी हम प्रैक्टिकल कंप्लीट करते हैं. RTL स्कीमेटिक लेना होता है. जनरली RTL स्कीमेटिक को अगर मैं क्लिक करता हूं यहाँ पे, ये RTL स्कीमेटिक सिंथेसाइज होगा यहाँ पे, and we are able to see the RTL waveform. But sometimes this window may not be proper. ऐसे इसको single line में लेना. But sometimes this background is black, and with the black background, if we are taking the printout,
it will make the cartridge empty. cartridge में जो भी इंक है वो empty हो जाता है. यहाँ पे तो by default setting से आ रहा है. Otherwise we have the options. Go to the edit menu, go to the preferences, and in the preferences we have the color schemes. This is color schemes, and using this color scheme we can change the color scheme for the RTL, maybe schematic. We can use those kind of the things. For example, suppose मैंने यहाँ पे simulation किया है. I have simulated this waveform. इस waveform को मैंने simulate किया हुआ है, and I am able to see this waveform. इसको मैं minimize करता हूँ और इस waveform को मुझे print out लेना है. लेकिन look at this complete background is black. And if I'm taking the printout with the black background, it is difficult for me. That's why we can go to the edit, then we can go to the preferences, then we can go to the color. This is simulator. This is otherwise we can have a default scheme, new scheme one. Otherwise you can create the scheme also. Apply. Okay. Now look at this. This background is bright. Otherwise, again you can go to the edit, then you can go to the preferences, and then you can select the default scheme. Apply. Okay. Default scheme, I'm getting the same. Otherwise, you can go to the edit menu, go to the preferences, then go to the color scheme, create the new. This is new too. Window background white. Window text कैसा चाहिए आपको? Black. Text black चाहिए. And this is a window white background. Look at here. This is background. I'm selecting this text. I'm selecting, and then waveform area. I'm selecting white. This name area. I'm selecting it as white again, and text. I'm selecting text as a black. I can apply. Okay, something like this. This area may be black, may be white. Accordingly, you can select a scheme of your choice. And अगर इसको float करना है तो यहाँ पे एक window, just इसको click कर सकते हैं. ये आपका window zoom out होके आ सकता है और इसका print out आप ले सकते हैं. Otherwise, you can use the default scheme also. यहाँ पे हम default scheme भी use कर सकते हैं. क्योंकि यहाँ पे मैंने waveform किया generate. अभी जब तक मैं scheme change नहीं करूंगा वही scheme रहेगा. The scheme. Otherwise, I will go to the edit, I will go to the preferences, then I will go to the color scheme, and I will select the default. ISE default scheme, apply, and okay. This is apply and okay. This is my original window, whatever I have. These things we have to do. This is the part related to how to synthesize and how to simulate any design with the given specifications. This is first approach I have discussed, and this approach is the top down. कभी-कभी इस फाइल को कॉपी करना होता है, तो इस फाइल को कॉपी करने के कैसे मेथड से मैं इसको दिखा रहा हूं पर. I will just closing this window. मुझे कॉपी करना है. I want to copy this file. इस फाइल को कैसे कॉपी करते हैं? Just minimize this everything. सभी की मिनिमाइज करना है. Then go to the PC. Then look at where you have installed the software, Xilinx. Here .xilinx is a file if you are installed on the C drive पे. उसमें एक project create होगा. जो मैंने project create किया था, TYBTech. Look at this. What is name of my project? Name of my project is TYBTech. Just I will copy this project. ये project को मैं copy कर सकता हूँ. I will copy here and I will paste somewhere. Just I have copied everything in my design. मेरे design में जो कुछ भी था मैंने सबको copy कर लिया. ये TYBTech मेरा design यहाँ पे आ गया. I can delete from there. I can run from here also. लेकिन इसमें से हमें काम की चीज क्या है? I will show it to you. I will show it to you. Again, if I'm going to this C drive, otherwise I can use whatever I have copied. Here, इस केस में आपको यहाँ पे दिख रहा है this file .vhd file. Are you able to see here? This text file and _3_ text file. ये आपका प्रोग्राम है. ये 4_ mux ये आपका प्रोग्राम है. ये not gate का प्रोग्राम है. ऐसे ही नीचे प्रोग्राम्स होंगे आपके जो test 4:1 test not gate. ये सभी VHD फाइल्स हैं. आप इसको रख सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए. मीन्स हाउ?
What I will do, I can copy this. Now this is one file, this is second file. Is it right? This is third file, this is fourth file, this is fifth file, this is sixth file, this is seventh file, this is eighth file. All files are .vhd copy. इस फाइल को कॉपी करके मैं अलग जगह पे स्टोर कर सकता हूं, इसको मेल को अटैच भी कर सकता हूं. VHD files. Is it right? I can paste here. These are my VHD files for this particular project. ये फाइल आपका अटैच हो जाता है because these are not the executable files. These are the VHD files. And when I will paste these VHD files in the executable mode, then सभी हमारा फिर से रन होता है. Is it right? Otherwise, मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ ये कंप्लीट डिजाइन को. आई एम क्लोजिंग दिस डिजाइन. एवरीथिंग आई हैव क्लोज्ड. तो डायरेक्टली जो टीवाई बीटेक मैंने जो प्रोजेक्ट कॉपी किया है इसमें जा सकता हूं और यहाँ पे जो कर्सर दिख रहा है हमारा ये लुक एट दिस पार्ट. लुक एट दिस पार्ट. यहाँ पे टीवाई बीटेक ये एरो दिख रहा है. जस्ट आप इसको डायरेक्टली क्लिक करके भी इसको रन कर सकते हैं. अगर मैं इसको डायरेक्टली क्लिक करूंगा तो अपने आप ये रन होगा एंड एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ द Xilinx ISE simulator. This is the first option. Is it right? Now, how will be the bottom-up approach? We have discussed it. Now, I will discuss within 5 minutes how will be the top-down approach. Top-down approach कैसे होगा 5 मिनट में मैं डिस्कस करता हूं क्योंकि सभी प्रोग्राम फाइल्स मेरे पास रेडीमेड बने हुए हैं. Now look at this. ये अपने आप ओके करोगे यहाँ पे अपना 4:1 मार्क्स यहाँ पे जनरेट होगा. M1 M2 M3 है. यहाँ पे सिमुलेशन में जाएंगे. जो जो आपने सिमुलेट किया था वो सभी उस फाइल में रहेगा. Right? Now what I will do? I will delete this file. मैं इस फाइल को पहले इसको रन करता हूं. अदरवाइज यहां से भी जाएंगे तो वही जाते हैं. Okay. I will use file new project ty underscore btech 2. I will give the another name ty underscore btech. Just wait. ty underscore btech 2. Is it right? Next. C drive is read only. Okay. Just I will close it and I will open it from file. ओपन प्रोजेक्ट से भी आप कर सकते हैं. जो सी ड्राइव में है ये डेस्कटॉप का ओपन हो रहा है. मैं सी ड्राइव में सेव करना चाहता हूं इसको. आई विल गो टू द Xilinx, देन आई विल गो टू द TY BTech. मैं इसको ओपन कर रहा हूं. TY BTech जो मेरा सी ड्राइव पे स्टोर था वहां से मैंने ओपन किया. फिर यहीं पे मैं क्रिएट करता हूं न्यू प्रोजेक्ट. आई विल क्रिएट द न्यू प्रोजेक्ट TY underscore BTech 2. दूसरा प्रोजेक्ट मैं क्रिएट कर रहा हूं यहाँ पे. दिस इज the next and finish. Is it right? This another project is created and in this project I'm using the top down approach. मैं top down approach यहाँ पे use करता हूँ. Look at how will be the top down approach. मैंने यहाँ पे text files copy किए थे. अभी ये VHD files. पहले मैं क्या कौन सा फाइल यूज करता हूँ? मैं यूज करता हूँ 4:1 मार्क्स. ये टॉप वाला फाइल यूज करता हूँ. I will open it. I will control copy and I will paste in this design. इसमें डायरेक्टली मैं पेस्ट करता हूँ. I will right click to this. राइट क्लिक करके यहाँ पे VHDL मॉड्यूल. इसका नाम क्या था? 4:1_marks. 4:1 marks था इसका नाम. Is it right? I will check it again. 4_1_marks is the name. 4_1_marks. 4_1_marks is the name. I will create next. I will not give the input. Next. I will make it as finish. I will select everything. I will select all here. I will copy and I will paste whatever I have done previously. Is it right? ये मेरा टॉप मॉड्यूल है. मैं इसको अगर सेव करता हूं, if I will save here. Now look at, मैं इसको just zoom करता हूं पहले. I will click on this. Look at here. This M1, M2, M3, M4, M5, M6, N7. These are not known to the system. ये question mark है. मैंने यहाँ पे लिखा है component NOT gate. But I have defined it as NOT gate. But how is the NOT gate is not known to the system? System को पता नहीं है.
इज इट राइट? तो ये मेरे सभी मॉड्यूल तो क्रिएट हो गए, लेकिन ये मॉड्यूल क्या है? ये ब्लैक बॉक्स है, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो मुझे इसका भी प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। इसका प्रोग्राम हम कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। क्लिक ऑन दिस मॉड्यूल, राइट क्लिक, देन VHDL मॉड्यूल। इस मॉड्यूल का नाम यहाँ पे क्या है? नॉट अंडरस्कोर गेट। नॉट अंडरस्कोर गेट इज द नेम ऑफ दैट मॉड्यूल। आई विल क्लिक ऑन द नेक्स्ट, आई विल क्लिक ऑन द नेक्स्ट, आई विल क्लिक ऑन द फिनिश। एक एम्प्टी नॉट गेट क्रिएट होगा। लुक एट हियर, ये नॉट गेट अभी क्वेश्चन मार्क नहीं दिखा रहा, लेकिन ये मेरा करेक्ट प्रोग्राम नहीं है। व्हाट आई विल डू, मैं इसको जूम आउट करता हूं और मेरा जो नॉट गेट का प्रोग्राम यहाँ पे लिखा था मैंने, उसको कॉपी करता हूं। आई विल कॉपी दिस, कंट्रोल A, कंट्रोल कॉपी, एंड आई विल पेस्ट हियर। इसमें मैं पेस्ट करता हूं, यहाँ पे कंट्रोल A, कंट्रोल B, इसको मैं सेव करता हूं। ना लुक एट, ये M1 और M2 ये दोनों नॉट गेट्स हैं, ये अभी प्रॉपर हो गए, ये दोनों प्रॉपर हो गए। फिर M3 मेरा एंड गेट है, 3 इनपुट वाला। मैं इसको राइट क्लिक करता हूं, न्यू सोर्स करता हूं, इसका मैं VHDL मॉड्यूल लेता हूं। जस्ट आई विल जूम इट अगेन। इसका VHDL मॉड्यूल मैं यहां पे लेता हूं। व्हाट इज दिस नेम? एंड अंडरस्कोर 3, मैं यहां पे सेम नाम देता हूं, एंड अंडरस्कोर 3 अंडरस्कोर इन, ये मैंने नाम दिया। यहाँ पे मैं ये VHDL मॉड्यूल लिया है, मैं इसको नेक्स्ट करता हूं। ये पोर्ट मुझे देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट ही करने वाला हूं। देन फिनिश, ठीक है। यहाँ पे ये मॉड्यूल क्रिएट हो जाएगा। मैं जूम आउट करता हूं और इस मॉड्यूल में मैं क्या करता हूं, ये यहाँ पे जो मैंने कॉपी किया है, ये VHD फाइल्स, एंड गेट वाला फाइल्स कहाँ पे है? एंड 3 इन। मैं इसको कंट्रोल A करता हूं, कंट्रोल C करता हूं, कॉपी किया मैंने, आई हैव कॉपीड इट, आई विल कंट्रोल 8 ऑल, आई विल पेस्ट इट, आई विल सेव इट। नाउ लुक एट हियर दिस पार्ट। इस पार्ट को देखो, अभी हमारे M1 ओके हो गया, क्वेश्चन मार्क निकल गया, M2 का निकल गया, M3 निकल गया, M4 निकल गया, M5 निकल गया, M6 भी निकल गया, because now M6 is AND gate, it is known to the system and its function will be something like this. फाइनली मैं इसको राइट क्लिक करता हूं, इसको न्यू सोर्स करता हूं, ये मेरा है, और ये VHD मॉड्यूल, VHDL, इसका नाम है और अंडरस्कोर 4 अंडरस्कोर इन, ये मेरा 4 इनपुट का है। मैं इसको नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश करता हूं, इसको फिनिश करता हूं, बिकॉज मुझे पोर्ट के नाम नहीं देने हैं, मुझे कॉपी पेस्ट ही करना है। आई विल गो टू द VHD फाइल, मैं यहाँ पे VHD फाइल को जाता हूं, ये और का है मेरा। आई विल कॉपी दिस, कंट्रोल A, कंट्रोल C, आई विल copy here and I will paste here. I will save the design. Look at here, everything will be created. अगर मैं इसको सिंथेसाइज करता हूं तो आपको सिंथेसाइज दिखाई देगा, और अगर आप इसको RTL स्कीमेटिक देखना चाहते हैं तो यू कैन सी द RTL स्कीमेटिक। लेकिन इसको मैंने TY-BTEC 2 में किया है, उसको TY-BTEC 1 में किया है। आप अलग अलग मॉडल भी कर सकते हैं, एक में भी रख सकते हैं, अलग अलग रख सकते हैं, चॉइस इज योर्स। इफ आई एम एबल टू शो हियर दिस RTL schematic for this, its RTL schematic will be same as that, will be same as that. Look at this, यहाँ पे एक और गेट है, यहाँ पे एक एंड गेट है, यहाँ पे एंड गेट है, यहाँ पे एंड गेट है, यहाँ पे एंड गेट है, here is also एंड गेट, here is also एंड गेट, and this complete is one system. साथ में इसका सिमुलेशन भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक ही फाइल है, यहाँ पे सिमुलेशन आप देख सकते हैं। I will use the new source, then I will use the test bench, just I can give the name test underscore 4 underscore 1 underscore marks, और यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ, इसको 4:1 marks को करना है, नेक्स्ट एंड फिनिश। मैं बाकी कुछ नहीं करता हूँ। और जो मैंने टेस्ट फाइल क्रिएट किया था, जो टेस्ट फाइल हमने लिखा था, उस टेस्ट फाइल को मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। 4:1 marks टेस्ट, 4:1 marks, इस फाइल को मैं कंट्रोल A, कंट्रोल कॉपी, just I will do that. I will come to this, I will control A, I will paste here, I will save this design, and I can synthesize this design, इस डिजाइन को सिमुलेट कर सकते हैं, और यहां से आपको फिर वही वेवफॉर्म मिलेंगे जो हमने पहले केस में मिले थे। इस अप्रोच को हम कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। फर्स्ट वी आर डिजाइनिंग द टॉप मॉड्यूल, and then we are going internally. This concept is known as
टॉप डाउन अप्रोच। यहाँ पे सेम वेव फॉर्म है, जो पहले हमने कंसेप्ट देखा, उस कंसेप्ट को हम कहते हैं बॉटम अप। मींस फर्स्ट वी आर डिजाइनिंग द इंटरनल आर्किटेक्चर एंड देन वी आर डिजाइनिंग द टॉप मॉड्यूल। एवरीथिंग विल बी accommodated when we are saving the design, but when we are going from the top to bottom, in that case top module will be created, which is unknown module. That unknown module we have to create, and so on. That's it from my side for this particular class. From the next lecture, I will discuss the practicals related to this new designs.